हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ संडे एनालिसिस विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास। आई एम अ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट विद स्पेशलाइजेशन टुवर्ड्स फॉरेक्स, कमोडिटी, ग्लोबल मैक्रो। और ये जो वीडियो है, मैं पहले ही बता देता हूँ, वी विल गोइंग टू डिस्कस द मैक्रो पिक्चर। जो बहुत लिटिल बिट, सारा मैक्रो पिक्चर दिखाना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बट ओवरऑल अ मैक्रो पिक्चर, लुक एट व्हाट आर द कमिंग डेटा। जैसे आने वाले वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट वीक इज द नेक्स्ट वन। What are the opportunities that are coming across asset class? We'll first look at bonds, then we're going to look at equity opportunities like indices, and then currency and commodity opportunities as well. तो इसके थ्रू हम लोग जाएंगे। तो let's start off quickly. I think you are going to enjoy the video. This video, as you can see, it's going to be in English format. थोड़ा हिंदी, थोड़ा English, to a mix to reach a greater audience. So I'll come to the this chart analysis later on. First, let's go to the macro picture of it. तो इसमें जो दिख रहा है नेक्स्ट वीक का डेटा, लास्ट जो वीक का डेटा था, लेट्स कम बैक अ बिट। आई एम इन द enmacromicro.me, जो मेरा फेवरेट वेबसाइट है टू डू द मैक्रो एनालिसिस। और आप मेरे स्टूडेंट है, काइंडली आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिल सकता है। डोंट बाय डायरेक्टली, यूज द स्पेशल डिस्काउंट विंडो एंड देन गो फॉर द परचेज। एंड आपको परचेज से पहले वे एक्स्ट्रा ट्रायल भी मिलता है, एटलीस्ट फ्री ट्रायल। यू कैन एंड यू शुड गो फॉर दैट। तो लास्ट वीक जो इंपॉर्टेंट डेटा था, दैट वाज यूएस का मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, विच वाज अनएक्सपेक्टेडली वीकर। काफी वीक था डेटा, जो स्पेशली नॉट काफी, एक्सपेक्टेशन से वीक था। इट वाज 47.80। दिस वाज नेक्स्ट जो अपडेट आएगा फर्स्ट, मतलब अगले महीने में। ये अपडेट में प्रीवियस डेटा वाज 49, इंप्रूवमेंट हो रहा था थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे 47.80 जैसे ही आया, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन डिक्लाइन, रेट्स ड्रॉप्ड। एज रेट्स ड्रॉप, डॉलर डिक्लाइन टू। तो और उसके बाद में बाकी मार्केट्स में ऑब्वियसली इंपैक्ट छा गया। अगर ये आप ये इंपैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, देन इफ यू आर माय स्टूडेंट, देन यू कैन ज्वाइन मी। ये आने वाले दिन में आई विल एक्सप्लेन, जल्दी आपको लोगों को बताएंगे। तो अभी इसको थोड़ा देखते हैं। इस बार का जो साइकिल है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, वी आर इन रिसेशनरी साइकिल नाउ। रिसेशनरी साइकिल में हम लोग पहले लेग में, इसमें टाइम हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते। देयर इज अ मॉडल टू इट, वो भी आप सीख सकते हैं मेरे से बाद में, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स। बट एनीवे, वी आर इनटू दैट फेज। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि दिस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ये जो लेवल पे डिक्लाइन हुआ था टुवर्ड्स जून, दैट लेवल हैज ऑलवेज कोइंसाइडेड ब्रॉडली विद recession, and many sare indicators which are heavily signaling weakness are historically towards the recessionary level. But जो हुआ नहीं अभी तक कुछ कुछ जगह पे, is the weakness in the overall housing sector, weakness in the employment sector. हो रहा है धीरे धीरे, that is actually gradually affecting, and we did not have a credit event जो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट का कैश क्रैश ट्रिगर करता है। सो दीज फ्यू ट्रिगर्स आर पेंडिंग, जो आई थिंक 2024 में रीच होने का हाई प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली एट द सेकेंड हाफ, टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। बट लेट्स नॉट गो विद द प्रेडिक्शन, हम लोग एक मॉडल है, मॉडल के जरिए ही जाएंगे। और उसमें आई लाइक टू शो यू समथिंग दैट दिस पीएमआई लेवल, आई कैन डू इट दिस DIY से, आई कैन एडिट दिस डेटा एंड इसको और डेरिवेटिव इसका बना सकते हैं। तो ये दिखा रहा है चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ द सेम डेटा फ्रॉम अ ईयर अगो। सो यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस कमबैक हो रहा था, दिस वाज एक्चुअली, ये जो स्टॉप हो जाना, दिस वाज अ कमबैक, बाउंस बैक। और अब अगर बाउंस बैक यहां से फेड हो रहा है, दिस कुड बी अ मेजर कंसर्न। ये बाउंस बैक के बाद ये क्रैश, बाउंस बैक के बाद एवरी टाइम ड्रॉप, बाउंस बैक एंड देन अ बिगर ड्रॉप, which leads to the final dip in the recession. So I'll be closely watching the PMI report. PMIs are the
very of the leading sort of indicators. So PMI data, this is an old news. अब जो हम लोग देखना चाहेंगे what is coming up in the, मतलब आने वाले दिन में important data क्या आ रहा है. तो MM daily पे let's go to the next week का calendar. उसमें main data जो आ रहा है, that is the Friday. The non-farm payroll data is the US का unemployment report, the most important data of the global market. So this day I'm going to hold a live session for the students that are already there. You can join the live session of this. You can get the link from your course coordinator. And जो लोग यहाँ पे already रेनबो community में है, रेनबो traders community, आप लोगों को directly link दिया जाएगा from, I'll give you the link. For others who are not, you can get the link from the course coordinator. और जो कोर्स को, और जो कोई भी कोर्स में नहीं है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, बट यू हैव टू डू अ रजिस्ट्रेशन. You can do a registration of 999 or something. 999 should be the minimum. Yeah, 999 you can do a registration, and with the registration you can join on that date. And what you can additionally I can give you as a compensation is about additional 10 days, which means anyone anyone can get a trial of my setup of 20 days, to 20 plus 10, total 30 days of access to my setup, which should be way more than compensatory. So those who want to come in extra, you should do a registration with the Elan Markets about 999. It should not be less than 999, and you can join in that date. And those who are already students and Rainbow students, you'll be getting direct link from me. So यहाँ पे जो दिख रहा है, this is the MM daily. Most important data is this. इसके अलावा another mega event जो है, that is the ECB interest rate का policy. That is a mega event for the euro. So lot of big mega data are coming up. इसके अलावा we will be having early PMI reports, which will be service sector PMIs will be coming from China. Will be important to for us to, क्योंकि हम लोग चाइना का ETF में इन्वेस्टमेंट की बात किए हैं. So ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि चाइना का रिकवरी इज रियल, और इज चाइना रिकवरी इज जस्ट रेगुलेटरी पुश. और इंडिया का भी PMI, डिफरेंट PMI आएगा. इंडिया PMI, दो इट इज नॉट very important in the short term, but India has been a shining story in the latest जो slowdown चल रहा है global economy में. India has been a standout. So ये अगर अच्छा आता है, this can strengthen India's position as a standout among the global players. This is going to be very beneficial. I think even if crisis comes, if India keeps on shining, the next boom phase after the crisis will be the decade for, could be the decade for India. So here is, because India is very geopolitically well placed. So ISM services PMI is, we have it on Tuesday. So the services PMI, all the services PMI are coming on the Tuesday. So Tuesday we'll see some volatility in the foreign exchange market. And main जो डेटा के लिए वेट करेगा, that is the non-farm payroll, और वो डेटा का मूड जो बनाएगा, this is the ADP, this is the private reading. So, and non-farm payroll is the government official reading from the US labor statistics. So ADP employment change will set the mood for the non-farm payroll. इसके अलावा जो लोग आउटसाइड है, आपके लिए बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस इन इंडिया, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रेड लूनी. कैनेडियन डॉलर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन ट्रेडिंग कैनेडियन डॉलर. We have the usual crude oil, and obviously on Thursday we'll have the natural gas data. Also the weekly जो jobless claims आता है, that is also there. But main event on Thursday is the ECB. European Central Bank is the main event, followed by Friday non-farm payroll. These last 2 days we are likely to see immense volatility in the evening.
So if you are not familiar with these kind of events, it is highly recommended you consider whether you want to hold your forex and commodities position. All the markets will be affected, but especially forex and commodity, you will want to make sure, because as commodity you still will be able to exit positions, but currencies will close before both the events. So consider what you will be planning to do. इसके साथ इकोनॉमिक का कैलेंडर का डिस्कशन तो हो गया. नाउ विल कम बैक टू मैक्रो. और मैक्रो में पहले मैं जो देखूंगा दैट इज टॉपिक्स के अंडर सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक में वी कैन लुक एट द फेडरल रिजर्व. फेड का जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट बेस्ड एक्सपेक्टेशंस क्या चल रहा है. So still no major change from the last time. Is 75 basis points rate cut. At the beginning of the year, ये था 150. So market is now getting more and more aligned with Fed. Fed ने announce किया कि 50 I will cut, but यहाँ पे market is still expecting 75. So is it fine? Currently, market is no longer expecting. At the beginning of the year, it was expected कि at March it will be rate cut. But now market is expecting there will be no rate cut in June. Now ये जो coming Federal Reserve meeting है, जिसमें I will be holding a live marathon session which I every time hold on FOMC. So वहाँ पे this will be a focus of mine कि is the Fed fine with the new projection, or is it going to change its tone to once again influence the expectations of the rate cut. I was expecting actually a rate cut relatively quickly because Fed changed its tone actually in November, December, and say they finally did not follow up on that tone. Ki initial jo meeting tha, they did not follow up with that tone. Utna dovish tone se follow up nahi hua. That is a concern. But as we are almost एंड ऑफ द साइकिल, ये फेडरल रिजर्व का रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को फुल मैच्योर करने के लिए बिफोर वी स्टार्ट फॉलिंग डाउन. So unless Fed is really cutting, it's difficult. We are not getting our usual जो साइकिल स्ट्रेच्ड होते जा रहा है. एंड ऑलरेडी हिस्टोरिकली ये देखा जाए तो ये साइकिल इज नाउ द ऑलमोस्ट सेकेंड मोस्ट स्ट्रेच साइकिल आफ्टर द 2008. So let's see how it goes. Where it ends will be, I'll be keeping you updated. उसमें एक जो area है, this is the one of the area कि interest rate shock can be in area जहाँ पे interest rate और ऊपर की तरफ भाग रहा है, और another can be area of shock. और वो क्या हो सकता है? Let's go. Traders inside में let's go to maritime shipping. क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री जो है, दीज आर ब्लड वेन्स ऑफ आवर इकोनॉमी. जैसे हमारे ब्लड है वेन्स, उसमें सिमिलर. नाउ यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि दिस ये जो जंप हुआ था बिकॉज ऑफ टेंशन इन द रेड सी, हाउथी रेबल्स के वजह से, दिस कॉस्ट इज कमिंग डाउन. चाइना का से जो फ्रेट था, फ्रेट इज कमिंग डाउन. So obviously inflationary impact ज़्यादा नहीं रहेगा if it coming down towards the European goods. So that is one positive for disinflation and negative for the overall longer term euro. Immediately euro बेचने का इससे related नहीं है, but these are macro theme, धीरे धीरे play होता रहता है. इसको समझने के लिए you can do my class how these different theme play out करता है. So anyway, overall this is going down. Now this is going down, this could be of largely two reasons. कि एक तो चाइना का वीकनेस जो persistent है, जो मेटल मार्केट में फील हो रहा है मेटल का वीकनेस से, that China has been weak. So ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है. So China weakness can be a factor of which brings down the global economy or further slows down the global economy. So this is one factor. और other could be the geopolitical tension जिसके वजह से बढ़ा था. This could be coming down. This could be simmering down. तो वो समझने के लिए let's go to Suez Canal. This data is coming from IMF, International Monetary Funds के जरिए ये डेटा आ रहा है. And what I'm looking at,
number of ships and the total volume that is passing through the Suez Canal के जरिए जो पास कर रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं. Suez Canal is a very important supply chain lane in the global supply chain scenario. So जब से ये टेंशन हुआ था in the Red Sea, there has been sharp drop in traffic through Suez Canal. Now Suez Canal से traffic has given a comeback. But is this just a bounce back or is it now over? It is too early to say in the geopolitical. So if we want to say the geopolitical tension is over, we will definitely want to see these number of ships जो Suez Canal के जरिए पास कर रहा है, it go up. Now Suez Canal का opposite है, जैसे ships नहीं जा पा रहे through the Suez Canal, where they are going increase is via Cape of Good Hope, जिसके जरिए जो वास्कोडा गामा फाइनली इंडिया पहुंचे थे वो रूट के जरिए. दैट इज अ मच लॉन्गर रूट, मोर इन्फेस्टेड विद पायरेसी देन द सुएज कैनाल रूट. सो वहां से एक ड्रॉप दिख रहा है इन द नंबर ऑफ शिप्स. सो दिस इज अ साइन, कुड बी द जियोपॉलिटिकल टेंशन अंडरलाइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है. बट आई वांट टू सी मोर evidence, more clear decline to say no, yes, it's over. The and Suez Canal में recovery देखना चाहता हूं before I can say no. The supply chain constraint जो था, that is now significantly coming down. World Brewery Container Index में जो jump हुआ था, major it is Shanghai to New York and Shanghai, okay, New York, let's remove this. सो ओवरऑल जो रेट था, रेट में यूरोपियन रेट्स देख सकते हैं कैसे ऊपर उठा था बिकॉज ऑफ दिस टेंशन. नाउ इट इज ब्रॉडली वी कैन सी दे आर नाउ कमिंग डाउन. सो इसमें भी मैं नजर रखूंगा हाउ दे आर बिहेविंग. नाउ दिस बिहेविंग कुड बी ड्यू टू वन फैक्टर इज थिंग्स आर कमिंग डाउन, काम हो रहा है, शांत हो रहा है, और इट कुड बी दैट फर्दर ग्लोबल वीकनेस सेट इन कर रहा है जिसकी वजह से ये जो अप मूव हुआ था इन द शिपिंग रेट्स वो होल्ड नहीं कर पा रहा है. वर्ल्ड सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स इज, ये थोड़ा डिलेड डेटा है एंड नेक्स्ट अपडेट इज हैज नॉट बीन अपडेटेड येट. सो जितना अभी तक दिख रहा है that it is global supply chain is pressure is nowhere near the COVID level, but it is a lagging indicator. हम लोग अभी तक जितना बात किए, those are more leading sort of indicator. तो ये रहा एक सॉर्ट ऑफ ग्लोबल पिक्चर, स्मॉल स्केल, सो वेरी स्मॉल स्केल. सो यहाँ पे अब जो हम लोग चले जाएंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट पे चलेंगे. नाउ मैं अपने ट्रेडिंग के लिए ये रेनबो वेव का इस्तेमाल करता हूं जो मुझे स्पेशल कैंडल का एक्सेस देता है. So I fully use this setup as the trading setup. These candles are an awesome candles. So based on them I trade. So that's why मैं ये candle का ही इस्तेमाल करूंगा to do the analysis. And those who are already part of the rainbow community, you know how to do the analysis. So it clearly दिखाता है कि where we are moving down. So it makes picture clear. So यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें मैं टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट की हम लोग बात करेंगे. वन इज द यूएस इंटरेस्ट रेट एंड वन इज द इंडियन इंटरेस्ट रेट. उस बेसिस पे क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि it has gone up. This is 1 year. This is bonds which is showing some green. That means it's an interest rate positive. But as I said, it will not go up. और ये नीचे भी गया है लास्ट टाइम डेटा के बाद, क्योंकि डेटा वीक था, फेड से रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन. बट ओवरऑल आई थिंक जो चल रहा है इसमें कि this interest rate, this 1 year, 3 months are not great instruments for capital gain. These are good instruments to eat the interest rate. So आप अगर foreign citizen है, you can look how you can invest in the US 3 month, US 6 month treasury जो एक 5.3, 5.1 kind of interest rate provide कर रहा है in the dollar.
विच इज अ वेरी वेरी ऑसम रिटर्न। सो एक पार्ट आप इंटरेस्ट रेट खा सकते हैं। सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, और इसमें जो इंडिया के पार्टिसिपेंट्स हैं आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काइंडली आपका टैक्स लायबिलिटी चेक कीजिएगा। दिस विल कम अंडर टीसीएस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अलाउड है थ्रू लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दिस टीएलटी, ये इसमें हम लोग राइट की बात किए थे, बट नाउ लॉन्ग टर्म ट्रेजरी का अगर हम लोग देखेंगे चार्ट, US 30 year इज अ गुड वन। सो इसमें वी स्टिल डोंट हैव अ रेड कैंडल। सो वंस वी हैव अ रेड कैंडल वी कैन वंस अगेन गो फॉर द टीएलटी लॉन्ग। So that TLT long will give us, as interest rate drop, will give us a very good handsome return. बट उसके लिए ये ट्रिगर का मैं इंतजार करूंगा। और एक इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर सकते हैं, सिंस फेड इज वेरी मच एक्सपेक्टेड टू कट रेट्स, तो बेली ऑफ द कार्व जो यील्ड कार्व, उसमें हम लोग जा सकते हैं, दैट इज 3 to 10 year बॉन्ड्स। सो इंडिया में उसका आदित्य बिरला ट्रेजरी, आदित्य बिरला 3 to 10 year बॉन्ड ट्रेजरी ETF, तो दीज एक्सचेंज ट्रेडेड यूएस ट्रेजरी ETFs आर आल्सो अवेलेबल, बट ग्लोबल ETFs भी अवेलेबल है। तो उसके जरिए भी बेली ऑफ द कार मींस दिस काइंड ऑफ 10 year में। 30 year में फुल क्यों नहीं जा रहे, 30 year हैज ब्रोकन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। So this time there is the risk interest rate I can actually go up. So if we go for too much of long term, there will be capital risk. So whereas if I go for short term, there is no major capital risk and we can pocket the interest rate. So belly of the car where the rate risk and the interest rate incoming, it is somewhat balanced है थोड़ा। इसके साथ हम लोग जाएंगे इंडिया का लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में 10 year बॉन्ड्स, एंड उसमें वीकली चार्ट के जरिए जो दिख रहा है कि वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडियाज लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स एटलीस्ट सिंस दिसंबर से हम लोग इन्वेस्टेड है और अभी भी इन्वेस्टेड ही रहेंगे, बिकॉज ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज गोइंग डाउन एंड वी विल फुल्ली स्क्वायर ऑफ वंस वी गेट अ फुल ग्रीन कैंडल। After that, we'll once again wait for the full red candle. So next जो हम लोग जाएंगे bonds के बाद, we are going to take a look at the international indices, क्योंकि exchange traded fund के जरिए we can invest in them. So वहां पे S&P 500, इसमें अभी भी this is bullish trend is going on, but we have reduced our exposure in S&P 500 to diverse into other like Asian and European equities. So S&P 500 फिर से एक नया हाई बना रहा है, बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग, हम लोग इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, विल रिमेन इन्वेस्टेड एंड वी कैन थोड़ा पोजीशन इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द न्यू ब्रेकआउट। डाउ का एक्सपोजर हम लोग रिलेटिवली कम रखेंगे, दोज हु आर गोइंग फॉर द मिक्स ऑफ इंडेक्स। डाउ में अभी भी ब्रेकआउट के बाद ही 39,200 के बाद विल कैन इंक्रीज, बट ओवरऑल विल रिमेन इन्वेस्टेड इन डाउ। Then we have Nasdaq. Nasdaq भी strength दिखा रहा है, it is a comeback story. So Nasdaq ETF में we can increase our exposure. We will once again remain invested until we see the full red candle. But overall US indices में हम लोग exposure कम किए हैं, क्योंकि सारे यूएस इंडेक्स हैज नॉट बीन फायरिंग वेरी वेल। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए कि रासल जो है, it has been in a range, it's in a very tight congestion, mountain top resistance अभी तक ब्रेक नहीं किया, and it is trying to break higher, which is good news. That's why I today talked about कि थोड़ा position we can increase in S&P Dow. Now कभी कभी स्टॉक से बेहतर होता है indices if we want to cut the volatility of our overall portfolio. और मुझे लगता है ये वो टाइम है कि हम लोग थोड़ा स्टॉक से थोड़ा इंडेक्स की तरफ जाए टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी और ड्रॉ डाउन्स ऑफ आवर पोर्टफोलियो। इसके साथ साथ जो जो एशिया में जो हम लोग या ओशनिया बोल सकते हैं, जो इंडिसेक्स में हम लोग देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में एक कमबैक स्टोरी चल रहा है। तो न्यूजीलैंड में जो लोग बाहर है, आप वहां पे ETF देख सकते हैं, दिस बट वेरी स्मॉल एक्सपोजर
ये बहुत ही अर्ली कमबैक है. स्ट्रेंथ पीरियड इज नाउ ओवर. हम लोग जापान में इंटरेस्टेड. निके में रिकॉर्ड हाई चल रहा है, रिकॉर्ड हाई पे रिकॉर्ड हाई. We will continue remain invested and we will increase our exposure in Japan. Nikkei. China has been a comeback story. ये करेक्शन के बाद हम लोग बात किए थे कि इट विल बी, देन विल बी एक्चुअल रिजल्ट कि इज दिस अ कमबैक और इज दिस अ फेलियर. नाउ इफ द चाइना कमबैक स्टोरी गैदर्स पेस, इस ब्रेकआउट के अबव वी विल इंक्रीज फर्दर क्वांटिटी. और ये बाई सपोर्ट का सिग्नल जो आ रहा है, एक फुल ग्रीन कैंडल, इसके साथ शॉर्ट टर्म मोमेंटम है नहीं एसटी मोमो. सो विल प्लेस एन अलर्ट एसटी मोमो बुलिश, शॉर्ट मोमेंटम बुलिश. और उसके साथ हम लोग चाइना में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं. देन वी हैव चाइना के साथ एमएससीआई का कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसके हम लोग बात किए थे. सो एमएससीआई एशिया कुड बी अ कमबैक स्टोरी. इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म जा रहे हैं. सो दिस इज कुड बी, इज स्टिल नॉट रेडी. MSCI overall emerging markets, this is could be a comeback story, but these are broadly largely China story. So I think मुझे ऐसा लग रहा है कि rather than going broad emerging markets right now, since China has been battered, हम यहाँ पे risk reward favorable है towards China if the recovery comes true, जो हम लोग expect कर रहे थे. So if it does not, with the obviously technical setup, will cut off our exposure in China. But so far, I think China, rather going for MSCI, Asia and emerging market, it looks like China is more lucrative to go specific. And this is the global stock market. This is the total stock market of globally, and it is firing higher weekly chart. It is broadly bullish in the डेली चार्ट विद 93% विन प्रोबेबिलिटी. और हम लोग ब्यूटीफुली इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे. और जो यूरोपियन इंडिसेस दिख रहा है उसमें इटाली में न्यू मोमेंटम, विल रिमेन इन्वेस्टेड इन इटाली. We can see IBEX, which is Spanish. यहाँ पे comeback story था. This is not going well. So we'll be careful of any kind of investment in the Spanish index. But Germany is an awesome story. So Germany is still going up. So German index will remain invested in Europe. So Germany, Italy, and obviously CAC 40, which is French index, is not holding up that much. यहाँ पे correction हो रहा है red caps के साथ. शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेरिश. तो कैक 40 मैच्योर हो रहा है, वहां से पोजीशन कट कीजिए एंड कम बैक मोर जहां पे ग्रोथ हो रहा है. नाउ दिस इटली एंड जर्मन आर ऑलरेडी फायरिंग. I'll go for or look for more new opportunities like China. and ये जो बुक कर रहे हैं कैक 40 से, ये हम लोग थोड़ा एज अ कैश ही होल्ड करना प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट हम लोग जो इंटरनेशनल इंडिसेस के बाद आ रहे हैं, दैट इज द करेंसी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के हिसाब से. सो वी आर गोइंग टू लुक एट करेंसी सेटअप के जरिए. तो मैंने सेटअप चेंज कर लिया टुवर्ड्स फॉरेक्स एंड करेंसी. तो इसमें डॉलर का वीकनेस के बारे में हम लोग बात किए थे, अबाउट द वीकनेस इन डॉलर. So I will closely watch कि कैसा प्ले हो रहा है डॉलर का वीकनेस, because that is very important for Euro USD. Euro USD I'm out because it's a mixed market का situation बन गया है ये, with a 71% now consolidation का chance. So and if bulls go up, this is the main resistance, and for bearish I need a full red candle. So I cannot do much currently on the Euro USD. GBP USD is another counter जो मैंने बोला is things are in becoming interesting. Will it go up or is it I'm going to see a breakdown? So इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ with the alerts and with the levels. So once these go down, then I'll be interested very much in GBP USD. USD JPY, awesome exit by the special candles. Maximum stop loss squeeze होके exit करा दिया with the red candle भी also है. So we are out of dollar yen. No opportunities major in dollar yen.
USD INR, I don't invest much, but I have gone aggressive after बहुत दिन बाद USD INR में एक mood change दिख रहा है, at least not seen since the May 2023, a very long time. And so I have gone short in USD INR, aggressive a bit. I'm expecting a drop towards 82. I'm not big expectation, 82.5, 82.3. And I'm not choosing any timeline like I've gone a longer month contract. So this looks like a trend. If it does not, if I fail, the stop loss is too small to be very afraid. 30 paisa to 35 paisa stop loss is very minimal for me to, इसमें कोई issue ही नहीं होगा. बट यूएसडी आईएनआर का वीकनेस मतलब आईएनआर का स्ट्रेंथ फर्दर अपॉर्चुनिटी दे सकता है डाउन मूव का इन जेपीवाई आईएनआर, वह जहां पे एक एग्जिट आया था, ब्यूटीफुल एग्जिट के बाद विल वी सी अ ब्रेकडाउन फर्दर this week? Non-farm payroll, all these will be important, or are we going to see a reversal? So this will be my next major trade, how it goes, a breakdown or reversal. GBP INR, this is another of my trade which may come very strong. With INR being strong, I can see a major breakdown of GBP INR towards the down move. I'll be closely watching for GBP INR. Yet not ready. I need a full red candle to short. Once I get that, I can be a bit aggressive. Then usually, जब start करता हूँ trade, I usually am not aggressive. I start small, then I build up. But in these two particularly case, the way chart structure दिख रहा है, I think I will be a bit more aggressive. एक FOMO के जगह I'll start with the 3 FOMO. So you मतलब example के मतलब 2 to 3 times more aggressive I'll be looking from this chart. Euro INR in a mixed picture. I'll avoid. I place my alerts. ये रहे alert. और एक बार लगा के दिखा दे रहा हूँ. Price action bullish. और एक अलर्ट हमेशा के लिए लगा दीजिए कि परमानेंट कर सकते हैं एक अलर्ट को. रेनबो बाय वंस पर बार क्लोज हर दिन बता देगा कि मार्केट कौन सा साइड में अभी भी रेनबो अलर्ट के हिसाब से चल रहा है. रेनबो सेल वंस पर बार क्लोज क्रिएट, बस एवरीडे अलर्ट आता रहेगा. आपको बस अलर्ट के हिसाब से काम करना है. इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं वो दैट इज द इंटरनेशनल गोल्ड. इंटरनेशनल गोल्ड हम लोग जो लेवल की बात की, इट हैज गॉन अप. गोल्ड मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है. दिस हैज गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द, ये जो स्लैंटिंग जोन से ब्रेक हुआ है, मतलब बुल के पास स्ट्रेंथ है. और ये जो लेवल था मेरा, हम लोग डिस्कस किए थे कि इस लेवल के ऊपर मैं बाय करूंगा और मैं नेक्स्ट वीक मेरा फोकस रहेगा और पोजीशन इंक्रीज करना. बट हड़बड़ी नहीं करूंगा. मंडे कैन ऑलवेज गो फॉर अ करेक्शन. मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है. आई वांट बिग रन एंड आई वांट टू ग्रेजुअली बिल्ड अप विद रेनबो का पिरामिडिंग रूल के जरिए. आई विल कंटिन्यू टू बिल्ड अप. आप जो लोग मेरे क्लास किए हैं, यू नो द रूल्स, आप उसको फॉलो कीजिए. आई थिंक गोल्ड आई एम वेरी क्लोजली आई विल बी वाचिंग. और मैं गोल्ड में ये नहीं चाहूंगा ये जो लेवल जिसके ऊपर गोल्ड मूव कर चुका है इसके नीचे आ जाए 2060. नेक्स्ट जहां पे हम लोग जाएंगे दैट इज द एक्सचेंज यूएसडी इंटरनेशनल सिल्वर. क्लियरली अ मिक्स मार्केट हम लोग डिस्कस किए. आई एम नॉट रेडी, आई एम स्टिल नॉट रेडी. आई विल अबाइड बाय माय रूल. ये रूल मुझे पैसे देते हैं, सो आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड आई विल स्टिक टू माय जो मेरा जो रूल है. आपका रूल अलग हो सकता है मेरे से, इवन इफ यू आर यूजिंग माय सेटअप योर, बिकॉज इट्स अ प्राइस टाइम कंटिन्यूअम. इट्स नॉट अ पर्टिकुलर थिंग कि यही ट्रेड बनेगा. डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एक साथ चल सकता है. कोई आदमी बाय कर सकता है, कोई आदमी सेल कर सकता है विद अ डिफरेंट आउटलुक ऑफ अ डिफरेंट टाइम जोन. So gold I'm interested, silver I will not do anything. So these are two. इसके साथ जो और जो पेयर में इसमें मैं ट्रेड करता हूं दैट इज द यूरो येन, जिसमें फुल एग्जिट आ चुका है. दिस वाज द येलो बैकग्राउंड. येलो बैकग्राउंड के साथ मैं फुल एग्जिट करता हूं, भले ही नेक्स्ट डे बड़ा आई डोंट केयर. नेक्स्ट इज माय एंट्री इज विद प्राइस एक्शन बुलिश.
ये रहे प्राइस एक्शन बुलिश, और नीचे की तरफ एंट्री के लिए चाहिए प्राइस एक्शन बेयरिश। दिस टू अलर्ट डाल दिया, मेरा ट्रेड खत्म। और एक परमानेंट अलर्ट हम हमेशा यूज कीजिए कि रेनबो ट्रेड बाय, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा एक्स्ट्रा ट्रेड्स अलर्ट जो हो जा रहा है। एंड वंस पर बार क्लोज, एवरी डे रात को आप जब मार्केट क्लोज होगा आपको रिपोर्ट आ जाएगा कि कौन सा करेंसी अभी भी बाई 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 में है और कौन सा सेल में है। सो ब्यूटिफुली सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडिंग। इसके साथ लास्ट जो फोकस है दैट इज द कमोडिटीज। कमोडिटीज में मैं जा रहा हूं। कमोडिटीज में ब्यूटीफुल इनिशियल एक कॉन्ट्रा रन के बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं जिंक में। जिंक ये देखिए कैंडल बहुत स्क्वीज हो गया। So both side opportunities can come, avoiding zinc until I get further clarity. ये जो बाई मूव, इसके बाद ये बाई मूव, then it failed. इसके बाद it moved further towards the range. I'm holding 0 positions and ये दो लेवल का ब्रेक मुझे चाहिए। 212.25 क्रॉसिंग डाउन लगा दीजिए, और ये जो लेवल का ब्रेक हो रहा है 216.10, ये लेवल का अलर्ट लगा दीजिए क्रॉसिंग अप। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है 213.7, बिग मूव आ सकता है, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। जिंक कैन कंटिन्यू इट्स कंसोलिडेशन। एल्यूमिनियम भी सिमिलर एक कंसोलिडेशन जोन में है। एल्यूमिनियम में भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच। सेटअप को चेंज कर लेंगे कमोडिटी सेटअप में। तो लुक एट द स्ट्रेंथ टेबल को क्लियरली देखने के लिए, स्ट्रेंथ टेबल में एल्यूमिनियम न्यूट्रल, जिंक राइजिंग बट जिंक का स्कोर इन येलो, एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग रहने के बाद बट इट स्टिल ऑपरेटिंग विद इन अ रेंज। हो सके यहां से सेल सिग्नल की अपॉर्चुनिटी मिले। सो एल्यूमिनियम में आप जो अलर्ट प्लेस करना चाहेंगे दैट इज द प्राइस एक्शन बियरिश। और साथ में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ये लेवल का अलर्ट के ऊपर जाना पसंद करेंगे क्रॉसिंग अप 201.5, तब जाके ये जा सकता है 202.65 और फाइनली 203.55। ए मिक्स मार्केट सिचुएशन इन एल्यूमिनियम। हम लोग अब कॉपर में जा रहे हैं। कॉपर बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे ये सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस कैन बी अ कमिंग स्टोरी बाई के लिए अबव 737.70, सस्टेनिंग अबव 733.65 से 734 के ऊपर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू कंसिडर। एनी ड्रॉप बिलो 731 to 730 will significantly sour the mood for the bulls. So bull के लिए sustain above 734 to 735 is very good. Bear के लिए a breakdown below 730 is needed. Bulls will increase strength once 738 breaks out for as it makes new highs. नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। क्रूड ऑयल में आई विल वॉच द इंटरनेशनल चार्ट। क्रूड ऑयल में आई हैव एंटर्ड लॉन्ग पोजीशन। काफी टाइम से ही आई हैव बीन बुलिश। मैं बोल रहा था, सिग्नल मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। सो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। इसके ऊपर क्लोज हुआ है, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अनफॉर्चुनेटली एक स्पाइक के साथ क्लोज हुआ है। सो दैट इज बैड फॉर मी। दैट इज मीन्स आई कैन नॉट वेट टिल द यूएस क्लोज, बिकॉज इंडिया में मार्केट पहले क्लोज हो जाता। सो बट दिस लेवल के ऊपर सस्टेन होना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, तो दिस इज ओवरऑल अ गुड एंट्री। ये स्पाइक होने का मतलब कि मंडेज कैन बी अ करेक्शन डे, सो आई विल नॉट बी वेरी वरीड ऑन दिस अनलेस ये जो हमारा मैक्स सब स्टॉप है उसके नीचे जाने लगा। क्रूड ऑयल में यहां पे इंडिया का कैंडल अगर देखा जाए, दिस इज अ सस्टेनेंस अबव द लेवल which is very good. So this is an entry with 6504 or 6513 area as stop loss. And initially target I'll be expecting that very likely rainbow के structure के हिसाब से this area is the main resistance 6930.
जो लोग रिस्क एवर्स है, आपको ये खेलना नहीं चाहिए। आप रैदर क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑयल 1 माइनस क्रूड ऑयल 2, मतलब जो कैलेंडर स्प्रेड है, कैलेंडर स्प्रेड में आप ट्रेड कर सकते हैं। और कैलेंडर स्प्रेड में इंडिया में अगर देखेंगे सो इट्स वेरी वोलाटाइल, नॉट वेरी क्लियर कहां पे पिक्चर जा रहा है। बट आप अगर इंटरनेशनल मार्केट का सहायता लेंगे, देन यू विल सी इट इज मोर ऑफ अ स्मूथ। हमारा मार्केट इंटरनेशनल के साथ ही चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही प्राइस में। सो इट हैज ब्रॉडली बिन बुलिश। तो इसमें हम लोग बात की थी, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। हम लोग 0.38 में बाई का बात किए थे, इट इज नाउ वेल अबव 0.84 एंड दिस इज द लेवल इट इज गोइंग टू टच 1.10। एंड देखते हैं ये लेवल जाता है कि नहीं, माउंटेन टॉप। बट जैसे ये बढ़ेगा ओवरऑल क्रूड भी ऑयल प्राइस भी बढ़ेगा। सो आई विल कीप अ क्लोज ऑन check on the forward curve, and I will also keep a check on the actual price. नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे 125 मिनट्स में नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस इज इन अ मोर ऑफ अ रेंज। दिस लास्ट जो ब्रेकआउट हुआ था इट इज नॉट वर्किंग आउट, फेलिंग। डेली चार्ट में जाएंगे, विल बी एबल टू विजुअलाइज कि एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ के बाद एक बाइंग चांस, बट अभी तक बायर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग ये। तो इसमें स्पेकुलेटिव की तरह से, क्योंकि मैक्स स्टॉप नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इट स्टिल कैन गो सी सॉलिड अप मूव टुवर्ड्स से 175 और टुवर्ड्स 205 कैन हैपन। सो वी कैन गो फॉर ओनली स्मॉल स्केल पोजीशन। और जो अगर फ्रेश पोजीशन लेना मतलब लेना चाहेंगे, सो वी नीड अ बाय ट्रेड। So we need a breakout of 157. I need a full green candle. अगर बाई का ही मेरा मन है तो आई नीड अ फुल ग्रीन कैंडल इन 125 मिनट्स। तो उसका अलर्ट डाल दीजिए कि प्राइस एक्शन बुलिश, तब जाके देखेंगे। क्योंकि ओवरऑल जो ये सेल सिग्नल है ये यहां पे कॉन्ट्रा है 125 मिनट्स में, पर अपर टाइम फ्रेम में सेलिंग इज विद द मेन ट्रेंड। तो सेलर्स अभी तक भारी है, कंसोलिडेशन होने का ही चांस ज्यादा है 64, और 125 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन होने का चांस ही ज्यादा है 50%। सो इसमें लाइट पोजीशन रख के स्पेकुलेटिव ट्रेड का ट्राई करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये रहा सारे एसेट क्लास का डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इससे आपको आने वाले वीक में हेल्प होगा। इसके साथ साथ आप मेरे दूसरे वीडियो इफ एनीथिंग स्पेसिफिक ऑन स्टॉक्स एंड अदर, उसको भी देखिए, उससे भी आपको नॉलेज मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।